So open your Power BI and are you able to see my screen? Yes, Okay. So good morning, everyone, and welcome to this session. We are going to do a live report in Power BI today, and we are going to see how we can create a dashboard for a sales company, for a automobile company, which is dealing into multiple sales, car sales, multiple brands, car sale. And I'm going to share my screen now, and we are going to deep dive into how we can do that. We had already done one session before where we had imported the data, created data model, and I'm going to continue from there ahead. So I'll show you how to proceed further. Okay. So just a small recap of what we did earlier. So if you see the data model, where is that? Okay, just a minute. Okay, let me connect to the data again. There's some issue here. So there were two data set. One was your car data set. Another one was your Norway car sales by make. One was a CSV file, another one was a Excel file. So we'll connect to all these files using the get data option. So when you click on the get data, you get the data imported into Power BI. Before you do that, there is a path in Midway which is called as Navigator. Navigator allows you to check whether your data is perfectly clean or not. So if you see, I have selected brand master here, the make, logo, and image, they are not coming into the column headings. So we'll quickly do what we will just see the other set also, car data set. We'll put a tick on both of these and we'll go to transform data. It will take us to Power Query Editor. Once once we are on the Power Query Editor, that Power Query Editor will help us in cleaning the data. Okay, so we are on Power Query Editor now. Okay, it will clean the data and it will then import the data into Power BI. So uh, it is always a recommended step to go to through this route. Okay, even if your data is clean. So we'll say what we'll do is these are the column headings. We want to make it as column heading. We will click on use first row as headers. It is there in the home tab. Use first row as headers. Now, when you do that, your data is having headings. So make logo PNG image. Until you do this, you will not be able to work on Power BI. Now, what is the problem here? Yeah, so this data is also loaded. Now you see model, year, price, transmission, mileage. They are appearing as column headings. So we don't have to do anything precisely in this particular sheet. So it's okay. I can say close and apply. So now data is getting loaded into Power BI. Okay, so we'll load the data into Power BI. And there is one more sheet which is to be imported. That is the Norway car sales by make. It is a CSV file. I have to import that CSV file. So now I'm going to do that. So we'll wait some for few seconds for the data to get loaded. And then depending on the size of the data, it'll take some time. Okay, so these two sheets from the same file gets loaded and there is a auto connection in between. There is a connection in between both the sheets. There is something common in between them, which is a make. And that is why they have got connected. Here also you have make, here also you have make. So they have got connected. Now let me import one more file, which is a CSV file. So I'll go to the text or CSV option
And now this is the another file, Norway car sales by make. I want to import that file also. So in Power BI, you can connect to multiple data sources. They can be in different format and you can connect to it. Now you can see that there are some null values over here. There are some issues over here. This is some different file. So you have to choose the right document which you want to connect to. Okay, so just give me 1 minute. Norway car sales by make. I take this file and it will show you the preview. Let's check the preview and then import it directly into Power BI. It looks good. So there's nothing to be changed. I don't want any changes. I can directly load also. There is no problem. And even after loading, if you feel that you have missed on any changes that you wanted to do, any correction you wanted to do, you can again go back to Power Query by clicking on this transform data. Now see this file, they had both come from the same sheet, so they are connected. But this is not connected. So how do we connect them? We have to make sure that what is the common field between them. So in the car data set and Norway car sale, the common data is make. So we can click on make and we can drag and drop it over here. So it will create a connection on its own. It will open a new connection window and you will see that make and make is appearing over here. Okay. They might have different names, but this list is having multiple iteration of the same name. BMW बहुत बार आएगा, Audi बहुत बार आएगा. यहाँ पे एक ही बार आ रहा है in this, ठीक है? So that means this is also in this also it is getting repeated. So it is a many to many relationship. Both are foreign key. There is no primary key over here. Okay, let's click on OK and let's connect this. So sometimes you don't see this OK button over here. What you need to do is up tab press करें. You press tab. It will take you to different sections. Okay, you press tab. Keep on pressing tab and eventually come to OK and then you can press enter. So now we have built a relationship between and it's a many to many relationship and bi-directional. किधर से भी data कहीं पे भी flow हो सकता है. ठीक है. Now this is the basic steps one need to do when you are learning Power BI or working with Power BI. Once you have Okay. developed the So connection, can you show it again? How to create the just drag and drop or drag and drop, nothing else. I'll show okay. it again. Yeah, just drag and drop. See here, if you see that year is also common, like the make is common. Okay, in between this and this. Yes. So these two tables are not connected. If you want to connect this table also, you can put this drag and drop over here. And this is also connected. Okay, but now Okay. this is not showing me star and star. If you see, it is one over here and star over here, right? One to many. Yeah. Yeah, so it's a one to many relationship. Now, what does it mean? Just give me a minute. So what does it mean? One to many. One to many means that this brand master data has this make the items, the field make has row items appearing only once. And this Norway car sales make has make values coming multiple times. We can see that in the data table. So when you come to brand master data, you will see that the make has whatever rows are there, whatever values are there, they are appearing only for the first time. Audi, BMW, all these things, they are appearing only one time. And if you see Norway car sales by make, this make is appearing multiple times. It is appearing multiple times. Okay. There are so many, Okay. but we have selected only few for our report. Now there is something NA also. Suppose you don't want this NA. Okay, I think Abhinandan is there. Abhinandan? Hello. Yeah. You had asked me this question, Abhinandan. Suppose you want to remove any particular field. Okay. Correct. Suppose there are NAs and I don't want that NA. What I can do is I can filter it out. Okay. Contains NA and click on OK. Now the problem is it will take out it will take all the words. So we can say starting with. Okay. So text filters, it starts with, and you can say NA.
Now this is the list. These are the some of the items which are there, but it's not making any sense. There is no this thing. So what you can do is you can remove. Now, yes, here there will be no choice of deleting any. Yeah, there is option of delete, but if you do, it will delete the column. कॉलम It डिलीट हो जाएगा सर। हाँ, कॉलम डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आपको पावर बीआई में डेटा लोड करने के बाद डेटा में से रिमूव कॉलम करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। उधर आता है पावर क्वेरी में, बट वहां पे भी आप वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। एनी स्पेसिफिक डेटा यू कैन नॉट रिमूव। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट हाइड दैट डेटा, यू कैन इग्नोर दैट डेटा, बट यू कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है। और व्हेन वी डू थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जब हम आएंगे, वी आर कमिंग टू इट नेक्स्ट वीक, so we'll start seeing how to create new tables. Then we will take only that data what we require. Now let us start by creating a dashboard. ठीक है। अभी हम अभी हम क्या करेंगे? Abhi will start. So we'll start with creating the dashboard now. Okay, so we are now going into the practical aspect of working with the dashboard. I'll show you the design of the dashboard, how the dashboard looks like, which we are going to create, and then we are going to look create it. See, now everyone wants to learn how to create a report or an interactive report. But the thing is that first what you should learn is how to design a report. घर बनने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं ना हम, और उसका आर्किटेक्ट को बुला के वी फाइंड आउट लाइक कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली क्रिएट अ डैशबोर्ड और अ रिपोर्ट। यू हैव टू डिज़ाइन अ रिपोर्ट, यू हैव टू लर्न हाउ टू डिजाइन अ रिपोर्ट। ओके। क्योंकि अगर मैं आपको बना बनाया दे दूंगा तो वो आपको लिए इट्स इजी टू कॉपी इट, राइट। बट बिफोर यू कॉपी एनीथिंग, you should have that clarity why we are copying it, why it is happening, why we have done like that. So I'm going to show you the design. Is it visible? That image is visible, everyone? Yes, sir. Yeah. Now see, we should have the title of the dashboard. ये नॉर्वे कार सेल्स रिपोर्ट जो है, इट इज अ टाइटल। ठीक है। इसको हम डायनेमिक भी बना सकते हैं। आई शो यू हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक टाइटल। ठीक है। और इट विल बी वेरी गुड। इंटरैक्टिव टाइटल भी हमारा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्वे कार सेल्स रिपोर्ट एंड यू आर सपोज सेलेक्टिंग ऑडी, इट शुड से सेलेक्ट से ऑडी। अगर आप टोयोटा नीचे सेलेक्ट करें तो ऊपर टोयोटा आएगा। तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है। या स्टैटिक टाइटल भी बना सकते हैं। देन यू शुड हैव अ स्लाइसर और अ फिल्टर, जिस क्योंकि व्हेन वी क्रिएट अ रिपोर्ट, व्हेन वी क्रिएट अ डैशबोर्ड, तो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा होता है। एंड व्हाट वी वांट इज वी वांट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी डिराइव फ्रॉम दैट डेटा। हम होलिस्टिक व्यू भी देखना चाहते हैं, मतलब सारा इमेज, सारा समरी एक साथ देखना चाहते हैं, और स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हैं। So when you want to see the entire thing overall, then you don't put any filters and you don't do anything. You just put the charts and graphs over there and the numbers over there. It will show you the entire view. पूरा आपको overview दिख जाएगा। लेकिन कोई भी मैनेजमेंट ओवरऑल पिक्चर देखने के बाद स्पेसिफिक भी देखना चाहता है, डिपार्टमेंट वाइज क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज क्या हो रहा है, एरिया वाइज क्या हो रहा है। तो हमें उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि यू कैन बिल्ड ऑल दीज थिंग्स एरिया वाइज। ठीक है। आप ये बना सकते हैं सब कुछ। कैसे बनाना है, we'll look into it। ठीक है। हाउ वी कैन बिल्ड अप, वी विल लुक इनटू इट। ओके। सो समीर, समीर, कैन यू पुट योर माइक ऑन? आवाज आ रहा है आपको? कैन यू ओपन योर माइक? आई थिंक यू हैड पोस्टेड ऑन लिंक्डइन अबाउट दिस नॉर्वे कार सेल्स, कल आपने किया था। वर यू वर द ओनली वन? आई वांटेड टू कंफर्म। यू कैन पुट अ yes in the chat box also if you have posted this dashboard on LinkedIn yesterday. I was checking out. So I want to confirm whether you are the same Sameer or there is some other Sameer. Yes, okay. तो क्या आपने बना लिया है? Have you created this? Yes, sir. Oh, great.
So people, there are people who are already working, मतलब he is already knowing Power BI but still coming to the class. So it's a good thing. And see, whatever you are doing, if you are a student, if you are a professional, you should, it's a time to market ourselves. It's time to brand, to create our own identity, digital identity, and a brand. And at any point of time, you can start doing it. LinkedIn is a very good platform to showcase your skills, your talent, and to get promoted also. I get most of my work through LinkedIn. I get to connect to good people through LinkedIn. So use that platform. आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए और उस पे just don't create an account, just don't add connections. Keep on posting like your day-to-day task that you're doing. Any motivational thing, anything, you put your picture and write anything. So उससे दो चीजें होगा. It is just I'm going away from Power BI, but this is important what I'm explaining. उससे दो चीजें होगा. एक तो आपका खुद का राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स. दूसरा, यू विल गेट विजिबिलिटी. तीसरा, यू विल लर्न कंसिस्टेंसी. हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा वीकनेस आई आई वुड से इज देयर कि वी आर नॉट कंसिस्टेंट. मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन हो. लेकिन वो कब होंगे? जब व्हेन आई पुटिंग द कंटेंट द वे पीपल वांट इट. मैं शॉर्ट्स बनाऊं. ऑल माय वीडियोस आर वेरी लॉन्ग वीडियोस बिकॉज आई जनरली पुट माय सेशंस ऑन माय यूट्यूब. बट छोटे छोटे वीडियोस डालने के लिए क्या चाहिए? एडिटर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना सब कुछ टाइम देना पड़ेगा. और फिर कंसिस्टेंटली आपको रोज काम करना है. ठीक है. आई एम डेली पुटिंग इन माई ग्रुप्स, कम टू द क्लास, कम टू द क्लास. तो उससे क्या होता है कि 1 or 2 people विल फील मोटिवेटेड कि हाँ चलते हैं. और किसी एक का भी अगर कुछ चेंज होता है तो समटाइम्स व्हेन यू पुट एनी पोस्ट, सम पीपल माइट गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू. ओके. सो कीप डूइंग दैट वॉट एवर यू आर डूइंग. समीर, तुम्हारे लिए भी है कुछ कुछ. अभी एक बना दिया तो उसके बाद रुक मत जाना. टू अदर थिंग्स उसी रिपोर्ट में कुछ चेंज करके, एंड डोंट पुट अप इमेज, पुट अ वीडियो. आप स्क्रीनशॉट करके 1 मिनट का कैमरे से एक वीडियो बनाओ कि ये इंटरेक्शन होता है, ऐसे चेंज होता है. एंड देन पुट इट, इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट. चलिए अब आते हैं हम कि ये डैशबोर्ड कैसे बनेगा, है ना. हाउ डू यू क्रिएट दिस रिपोर्ट? तो सबसे पहली चीज तो यू हैव टू ब्रिंग दिस फिल्टर, देन यू हैव टू ब्रिंग दीज नंबर्स. तो ये कार्ड्स हैं. यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ विजुअल आई हैव टू यूज फॉर व्हाट. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट बाय क्रिएटिंग द टाइटल फर्स्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टाइटल. ठीक है. यहाँ पर यू हैव अ नेट टेक्स्ट बॉक्स. ओके, देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर. सो यू कैन ब्रिंग अ टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर. ठीक है. और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ले आइए. ठीक है. और यू विल स्टार्ट टाइपिंग इट ओवर हियर. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्वे कार सेल्स रिपोर्ट. सो आई एम जस्ट टाइपिंग नॉर्वे कार सेल्स रिपोर्ट. बहुत छोटा दिख रहा होगा. आई विल सेलेक्ट दिस एंड नाउ आई विल मेक इट साइज 32 या 36 कर देते हैं. ठीक है. या 40 भी कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन लाइक हाउ यू वांट इट, यू कैन चेंज द साइज एंड ऑल. ठीक है. तो ये नॉर्वे कार सेल्स बाय रिपोर्ट आ गया. ठीक है. इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ. आई वांट माय साइन टू बी हियर. यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन इमेज और साइन और वट एवर यू वॉन्ट टू पुट. ठीक है. जो भी आप अपना ब्रांडिंग के लिए करना चाहते हैं ना, वो आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं, एनीथिंग. ठीक है. तो हमने ये टाइटल दे दिया. नाउ हाउ डू आई इंसर्ट अ इमेज? मैं यहाँ पर एक फोटो लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे आएगा? तो अगर आप इंसर्ट पे जाएंगे, so there is a option of image. Okay, there is an option of image in the insert, and let me see where do I have that. Let me bring in my photo. मेरी फोटो लगा, साइन तो मैंने बहुत लगा दी. So I have my picture here. So you can simply import any image over here. ठीक है. और देखिए, ये इमेज आ गई. ठीक है. इसको छोटा कर देते हैं हम. छोटी सी इमेज है. तो
दिस इज आई वांट टू पुट इट ओवर हियर, ठीक। यू कैन चेंज द सेटिंग्स ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे जाके इसमें जाते हैं फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ से इमेज स्टाइल एक्शन ये सब आ जाएगा, ठीक है। अभी व्हाट आई विल, ओके लेट मी टीच यू समथिंग मोर टू इट, ठीक है। ये हम धीरे धीरे करने वाले थे, लेकिन अभी हम इसको फिल करेंगे तो इट विल गेट फिल्ड। अभी मेरा फोटो पूरा दिख नहीं रहा था, अभी पूरा दिख रहा है, ठीक है। ये फिल कर दिया हमने। अगर आप फिट करेंगे तो भी ये ऐसा थोड़ा सा वो हो जाएगा, है ना, पिक्सल फट जाएंगे। तो लेट्स डू ये फिल। सॉरी, ये आपने टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कॉपी किया है क्या? हाँ हाँ, टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ लगाया था, उसके अंदर मैंने नाम लिखा। फिर मैंने क्या किया, आई वेंट टू इंसर्ट, आई वांटेड अच्छा, अ इंसर्ट। पिक्चर ओवर देयर, तो मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने इमेज ओके। ली, ठीक है, ओके। इमेज। एंड इन दैट इमेज आई हैव सेलेक्टेड अ इमेज, ओके। ठीक है। ऐसा है, जैसे सपोज आई वांट टू टेक अप दिस साइन। So when you import this, has this comes, okay, and then you can change the size and you can put it anywhere wherever you want like that, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन पुट। नाउ दिस इज द नॉर्वे कार सेल्स रिपोर्ट, इट्स लुकिंग वेरी सिंपल। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट टू पुट सम कलर्स एंड ऑल, यू कैन गिव एनी कलर टू इट, ओके। लेट्स से दिस कलर, वी टू मेक इट बोल्ड। हम उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं यू कैन डू फ्रॉम हियर, एंड देयर आर सम मोर वैल्यूज टू इट, देयर आर मोर ऑप्शंस टू इट एक्चुअली। अगर आप कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं दैट समवन क्लिक्स ऑन इट, इट विल शो दैट, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, डू इट, एक मिनट में आ रहा हूँ। ओके सो नाउ what I'll do is I'll teach you something। जैसे you want to make it a hyperlink। आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाए। when you click on this, so what you can do is in the title there is option of insert hyperlink, ठीक है। I will insert hyperlink and I will take it to my LinkedIn ID, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, I'll open my LinkedIn is already open, ठीक है। I'll go to my home page, and when you click on your name, your URL, it's give you your page, how you can reach, people can reach to you। So you copy that and bring and paste it over here, ठीक है। ये आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और डन पे क्लिक कर दो। अभी यार सिलेक्टेड ओनली नॉर्वे, तो ये नॉर्वे पे ही काम करेगा। अगर हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो पूरा ही करते हैं। लेट मी रिमूव दैट लिंक। यहाँ पे सिर्फ नॉर्वे दिखा रहा है ना, अभी हम पूरा सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन विल गो टू, या हियर यू हैव टू पुट द एड्रेस। अगेन आई विल कॉपी दिस एंड आई विल से डन। नाउ विल दिस वर्क, लेट अस सी, ठीक है, क्या ये काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जाना है, ठीक है। यू यू कीप ऑन द कंट्रोल की प्रेस्ड, ठीक है। एंड लेट मी कम आउट ऑफ दिस डिजाइनिंग मोड, और किधर चला गया। we have put a hyperlink on the text, ठीक है। अभी, yeah, so what we'll do is, अभी
when you click on this Norway, it should take you to the web page. You try on this thing, your whether it is taking or not. It should take. ठीक है, यहाँ पे link है, इस पे आप click करेंगे. It is a clickable link. It will take you to that web page. It is working. ठीक है, तो it will take you to the web page. वो ऑलरेडी चल रहा था, 4 बार खुल गया है यहाँ पर, है ना? तो that means it is working. I think there is some network issue at my end. Some speed issue is there. ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि this is working. Okay, now if you want to click on this image, I want it should take me to my YouTube. When I click on the image, it should take to my other Instagram handle or YouTube or whatever. So you can add the action button on. ठीक है, action पे आप जाएंगे. देखिए, it is a very important button actually. It will ask you what you want to do. So I want कि when anyone comes to my image, it should take to a URL, web URL. And then you have to give the URL. So I'll just give my YouTube address over here. These things are different. Maybe Samir, you must have watched some other video और आपने वो बनाया होगा देख के. वहां पे आपको ये सब चीजें नहीं मिली होंगी. ठीक है, how to create action button, how to create this thing. Now see, can you see this changing to hand symbol? यहाँ पर हम कर रहे हैं तो नॉर्मल एरो आ रहा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हैंड सिंबल आ रहा है. कैन यू सी दैट एवरीवन? Yes. अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है इस पे. लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक. नाउ यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस एंड वेट. लेट मी क्लोज माय ब्राउजर बिकॉज ये ऑलरेडी ओपन है. तो मैंने अपने दोनों ब्राउजर बंद कर दिए हैं, क्रोम और ये. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन कंट्रोल की एंड आई clicking on this image. Let me save this file also. इसका मैं rename कर देता हूँ because earlier I could not. I'll give today's date. Yeah, check it out. Is it working? Everyone, put any image. उसको control के साथ click on that image and see if it is taking to any. आप Google लिख दो, कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दो और चेक करो कि आपको वो ले जा रहा है क्या. It should happen actually because action button we have put it on. Action we have defined. Okay, you want to go to the URL. Okay. Image style is fill. That is okay. If you put a title, if you want to put a title, okay, check out my channel. Yeah, meet the. Click here to connect. Okay, this is what I've given, and I can just bring it to center. Change the color, whatever I want to give. I can bold it. Okay. अभी let's see. आप लोग को is it taking you to the website? Have you checked? Anyone? Yes, I was checked, but not taking into website. Not taking. Okay. Yes. Now why just give me a moment. Why it is not giving us?
It works. I'm not sure. Yeah. When you put it off, it will look as an image only. Action को भी मैंने off कर दिया है. Now again I'm here. I'll go to this format, and now I turn on the action. When you turn on the action, then you will see this thing, and it should work. Okay, we'll look into it why it is not giving us the result right now. देखते हैं इसको भी. ठीक है, let me put it here for the time being. Let me try and apply this action button over here. Okay, let me do one thing. एक बार हम internally इसको check करते हैं. I'm creating page 1 and page 2. ठीक है, let's say it is the car wise detail. We say car wise detail, and it is the overall dashboard. We can say overall report. हमने 2 पेज बना दिए हैं. What I want is when I click on this Ankita, it should take me to the car wise detail. ठीक है. So now I will add a action over here. Okay, and then I will say page navigation. Okay, page navigation, and destination. I want this page. It will show you all the pages which you have created. So these are called as pages in Power BI. Okay, so I have given a page over here. Now when I click on it, control and click, it should take me to the second page. Are we on the second page? Car wise detail. Do you see that? Yes, the second page. We are on the second page. That means it is working. That means that should also work. Now what I'll do is I will insert a visual over here. I'll go to insert. यहाँ पे you will see buttons. You will see buttons over here. Okay. And there is a back button. There are some buttons which Power BI already have created. Okay. So there's a back button, and when you click on this, you want it to take it to the main sheet, the overall sheet. So when you click on here, it should take you to the previous page. So here, action is there and back is there. You have to define where it should take, or you can click on the page navigation and again define that overall report. Okay, now when you click on this control and click, it will take you back to the overall report. Is it working? Everyone? I'm Okay. not getting this format box for the image right side. Sorry? This format box on the right side, Yes. How I'm you? not getting it. So On what the you do? image. Do you have this plus button over there? Which plus button? You are talking about these icons on the right hand Yeah, side. correct. And I'm You're not not getting this format tab itself for the image. okay. So first you have to select that image, and then you have to click on format. Then you will get this option. First select that Okay. image. Maybe you are not selected that image. I selected the image, but I think so that format toolbar is not there, I think so. So what you do is you click on view. You click on view, and you have to Okay. make sure that everything is selected. Your Okay. format should be selected. Okay. Okay. Now let us come and build that visual. Okay. So what we'll do is first we will bring these numbers: units sold, total revenue, total variance. Let's bring this number. Then I'll show you how to bring that. So how do you bring the numbers? We'll bring the card. Okay. Card contains only one value. So we will see home. Let's go to home. Let's bring this card. So this one card. I wanted 3 cards. Okay. I'm just keeping some space. So I'll copy 1, 2, 3. Control C, Control V have done 2 times. So one card gives multiple cards. Okay. So we have imported these blank formats for the visuals. Now we want some data over here. Okay. We want to have some data over here. These are blank templates. What you do is what data we need first. We want the units sold. Okay. Units sold. Now which sheet will have the units sold data? So brand master data doesn't have. Card data set
has the year, transmission tax, price, model, all these things, and Norway car sales by make has this quantity. So click on this quantity. I'll bring it first because I had selected that one. So it's showing 1 million. Everyone, are you also getting 1 million when you select this quantity? In the Norway car sales, I put a tick on the quantity. Are you also getting 1 million? 1M? Just give me a confirmation in the chat box. We are on the second page. Come to the first page and do that. Come to the first page. अभिनंदन आपको भी मिला ये 1 million? Actually, Prikshit, Shiva, Uday. Yes, I got 1 million. Okay, okay. Everyone confirm. Uday also. And Nancy, are you getting this 1 million? Now this I don't want to see as 1 Yes, million. sir. I want to see it as पूरा नंबर. चलो बताओ नैन्सी ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? एग्जैक्ट नंबर देखना है कितना 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है लेकिन 10 लाख है 11 लाख है 12 लाख है कितना है चेक करना है कैसे करेंगे? 3 डॉट्स जो है उन पे क्लिक करके ऑप्शन आ जाएगा। ये 3 डॉट पे क्लिक करा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? फॉर्मेट। फॉर्मेट। उसके बाद कॉल आउट वैल्यू। वैल्यू। Call out value, right? Call out value. Then display units. In the display units, you have to change it to none. You will get the exact number 13,47,250 cars का सेल किया है हमने ठीक है so 13,47,000 if you want to see in thousands you can select thousands so it will show you 1347,000 अगर आपको मिलियन में देखना है जो कि हम देख रहे थे तो मिलियन 1 मिलियन आ रहा है बट आई वांट टू सी अप टू 2 decimal places तो आई कैन से 1.35 मिलियन सो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा और वॉल्यूम या जिस तरीके से भी आपके पास टोटल नंबर है आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू वांट टू शो ठीक है इसको हम ऐसे ही रखते हैं बट आई डोंट वांट दिस सम ऑफ क्वांटिटी टू अपीयर बिलो तो व्हाट दिस इज कॉल्ड एज कैटेगरी लेबल यू कैन पुट इट ऑफ इसको हम ऑफ कर देंगे तो आई हैव दिस 1.35 मिलियन ठीक है आई पुट ऑफ द कैटेगरी लेबल नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ टाइटल इंस्टेड title will always be on top category label will always be on the bottom. So it is always good to have a title. यहाँ पे हम लिखेंगे number of units sold and you will put a background color. It is always good to put a background color also. ताकि थोड़ा सा highlight हो जाता है ठीक है and you can put any color and you can bring it into center and you can increase the font little bit to 20. That's it. ये दिन ठीक है इसको change मत करो ठीक है ये हो गया. So we have formatted this visual. We'll do some little more make up with this and what we'll do is इसका एक तो डिवाइडर ऑन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि यू विल हैव अ लाइन बिलो नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा ऐसा दूसरा यू कैन पुट ऑन द शेडिंग्स ऑन ये कहाँ मिलेगा आपको शेडिंग वाला ऑप्शन साइज एंड स्टाइल में व्हेन यू गो देयर इज अ विजुअल बॉर्डर एंड देयर इज अ शेडो so put that on ठीक है if you want to have a background color in 1.5 million जो कि white दिख रहा है अगर if you want to have some background color over there you can put a background from here okay let's say I want to have a dark color in the background ठीक है अब ये डार्क पे ये तो दिखेगा नहीं white तो what we'll do is we'll make it white font का कलर आप white कर दो ठीक है तो this 1.5 million somehow got highlighted ठीक है आप नंबर ऑफ यूनिट्स को भी ये ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन से डाल सकते हैं और ये जो नंबर आ रहा है इस पे येलो कर सकते हैं ये मैंने एक कार्ड बना दिया दिस इज माय फर्स्ट विजुअल व्हिच आई हैव क्रिएटेड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड नाउ द नेक्स्ट वन इज total revenue we wanted to find out total revenue so we'll come to the next card and the total revenue will come from price I'll go to the data pane
और मैं देखूंगा प्राइस कहाँ है, मुझे प्राइस कहाँ दिख रहा है। कार डेटा सेट में आएंगे, यहाँ पे यू विल सी द प्राइस, क्लिक ऑन द प्राइस। 1 मिलियन बिलियन, ठीक है, इसको भी मिलियन में कन्वर्ट कर देते हैं। यू क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन ओवर हियर एंड गो टू द कॉल आउट वैल्यू। ठीक है, नाउ सपोज यू वांट टू हैव द सेम फॉर्मेटिंग हियर, जो आपने जैसा फॉर्मेट इधर दिया उसको भी वैसे ही फॉर्मेट देना है। डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट प्रिंटर। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट दिस विजुअल, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट प्रिंटर एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। ठीक है, इसने सब कुछ दे दिया, बस बोल दिया ऐड विजुअल टाइटल, क्योंकि टाइटल ये खुद से नहीं बना सकता है। तो नाउ वी विल ऐड अ टाइटल, विल से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ गए, रेवेन्यू आ गया। थर्ड थिंग we want is the variants. We want the variants. So what we'll do is we'll go to the data pane again, और variant के लिए I want to find out the number of models. Variants mean model, so I'll select model. अब यहाँ पे you have to be sure। अभी आप एक चीज देखिएगा। ओके समीर, आई वांट यू टू आंसर दिस। कैसे आएगा ये बताइए, नंबर कैसे आएगा, हाउ मेनी वेरिएंट्स आर देयर, हाउ डू वी गेट दिस नंबर? Hello, sir. You have यस। to click first model and हाँ then make, sir. हाँ, मेक। Yes, sir. नो, आई हैव ऑलरेडी क्लिक्ड मॉडल। नाउ डू आई क्लिक ऑन मेक ऑल्सो? दिस कार्ड कैन ओनली हैव वन वेरिएबल, एक ही चीज रख सकते हैं कार्ड में। व्हेन आई क्लिक्ड ऑन मॉडल, इट इज शोइंग मी वन सीरीज, फर्स्ट मॉडल। इस मॉडल टेबल में ये जो कार डेटा सेट है, इफ यू गो टू दिस टेबल, कार डेटा सेट, इन द कार डेटा सेट पे जाना, सॉरी, कार डेटा सेट, इन द मॉडल इट इज शोइंग द नेम ऑफ द मॉडल, 3 सीरीज, 1 सीरीज। तो जो पहला मॉडल दिख रहा होगा वो 1 सीरीज दिख रहा है, सीरीज 1। ठीक है, तो इट विल शो मी दैट मॉडल नेम फर्स्ट। आई वॉन्ट टू सी द काउंट ऑफ मॉडल। ठीक है, क्योंकि मेक तो 5-6 है हमारे पास, 6 ही ब्रांड है। सी देर आर ऑडी, BMW, फोर्ड्स, हुंडई, स्कॉडा, टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, दीज आर द ब्रांड्स विच आई हैव, बट दे हैव डिफरेंट मेक्स। तो आई वांट टू सी कि टोटल कितने हमारे पास मेक है, बट यहाँ पे नाम आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा। एनीवन हु कैन गिव मी सम आइडिया, शिवा और एनीवन, नैन्सी, they are the people who have learned Power BI. That is why I'm asking all this to you. We can apply the formula count function. बिना फंक्शन के नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन अभी पूछ लिए, तो फंक्शन बता पाओगी कैसे लिखेंगे काउंट फंक्शन? बिना फंक्शन के कैसे होगा समीर? हाउ डू वी डू इट विदाउट एनी फंक्शन, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू काउंट? पहले मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ जब तक आप सोचिए। एंड ये अभिनंदन एंड शिवा, आई हैड डन दिस अर्लियर विथ यू ऑल। हमने एक कैसा किया है व्हेन वी वर बिल्डिंग द अदर दिस थिंग, तो यू शुड ऑल्सो नो दिस। आप भूल गए हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट आई गेस। Yes, yes, we discussed it, but not able to collect. Yes, so it happens when you don't like revisit or you don't practice it. इसलिए मैं बोलता हूँ कि लर्निंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज नॉट इजी। पीपल थिंक कि हाँ क्या है, हम यूट्यूब पे जाके कुछ भी सीख लेंगे और हो जाएगा बिना प्रैक्टिस करे। नॉट पॉसिबल, इवन आई फॉरगेट थिंग्स इफ आई डोंट प्रैक्टिस। इट्स अ लॉ ऑफ जब तक नेचर। के लिए प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ना, लॉ ऑफ नेचर ही है। अगर आप कोई भी चीज नया पढ़ते हैं और आप उसको ताक पे रख देते हैं, तो ताक पे रह जाएगा। इफ यू डोंट रिवाइज इट, इफ यू डोंट रिविजिट इट, इट विल नेवर बी इम्बाइब्ड।
बट क्या होता है ना, जब तक जरूरत, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस, क्या बोलते हैं, इन्वेंशन। जब तक जरूरत नहीं पड़ती ना, जब तक कोई नहीं जाता है, कोई डोंट, यू डोंट रिविजिट इट बिकॉज देयर इज नो नीड। क्या जरूरत है, ठीक है चल रहा है, सीख लेंगे, आज नहीं कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे। बट व्हेन यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट एनीथिंग एंड डोंट रिमेम्बर ऑल दिस, फिर अभी एट दिस मोमेंट व्हाट यू विल डू, व्हाट एनीवन विल डू, अभी नहीं आ रहा है, आप खुद से कर रहे होते, रिपोर्ट बनाना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्या करते हैं, विल गो टू यूट्यूब, वी विल सर्च इट, विल गो टू गूगल, विल गो टू चैट जीपीटी, वहां टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो भी टेम्पररी लर्निंग होगा, उस वक्त के लिए सीखेंगे, 3 दिन बाद फिर कोई पूछेगा, फिर नहीं पता। चलो, एनीवेज, कमिंग बैक टू इट, what we need to do is simple. We have to count this series. Okay, now come to the format, come to the data pane again. इस पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आइए आप, और इधर आइए, बिल्ड अ विजुअल। Now it is showing field. In the field, it is showing first model. Why it is showing first model? Because it is a text. Now there is the option of summarization. Summarization में लिखा है फर्स्ट, लास्ट, काउंट, काउंट डिस्टिंग, इधर ही आंसर था। Now what is the difference between count and count distinct? Tell me. What is the difference between count and count distinct? Yes, Samir, you could get it too. But why? Okay, answer this. What is the difference between count and count distinct? सर व्हेन वी सेलेक्ट काउंट, वो पूरा सीरीज को काउंट करता है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकता है। और जब हम्म, व्हेन वी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो वो सिर्फ डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू को ही सेलेक्ट काउंट करता है वो सर। करेक्ट करेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है यूनिक। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉडल नंबर है, जितनी बार भी मॉडल बिका है अलग अलग बार, वो उतनी बार रिफ्लेक्ट होगा। बट मुझे तो यूनिक वेरिएंट निकालने ना, अगर BMW 12 तरह के मॉडल बनाता है, 12 आना चाहिए। वो 12, अगर 12 बार आ रहे हैं या 200 बार आ रहे हैं लिस्ट में, तो 200 नहीं आना चाहिए। अभी जो आ रहा है वो 200 आ रहा है, या 0.07 मिलियन आ रहा है, मतलब वो उतनी बार रिपीट हो रहा है डेटा में। बट आई वॉन्ट डिस्टिंक्ट काउंट, सो आई सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। When I select distinct, now it is showing 0.0 million, क्योंकि मिलियन में है ही नहीं नंबर। What I'll do is I'll format it. I'll go to call out value and I'll select auto. So it is showing me that whatever data set you are having, it is overall having 147 variants. ठीक है, 147 variants हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, ये 147 जो आ रहा है, या 1.35 मिलियन आ रहा है, या 1200 मिलियन आ रहा है, इज इट for one car, or it is for all the models, all the car, all the brands that we have? All the brands. All, it is a cumulative figure, it is for everything, ये सबके सबके लिए है। ठीक है, now I want to see the data based on different car models. I want to see the data based on different car models. ठीक है, so how do I do that? So to do that, I have to bring a slicer. Always remember, whenever you want to bring any filter into the data, you always have to use this slicer. You have to use this slicer. You have to use this slicer. Okay, you have to use this slicer. Okay, you have to use this slicer. So once you use this slicer, अभी क्या करना है इस slicer के अंदर? What do we want to have in this slicer? What do we want to put into this slicer? Come स्लाइसर on. कहाँ से इंसर्ट किया है सर? इधर ऊपर से, यहाँ पे देखिए। ओके, इंसर्ट। नैन्सी मैडम, क्या आएगा स्लाइसर के अंदर? डिफरेंट कार मॉडल्स। हाँ, तो कार मॉडल आएगा या कार ब्रांड आएगा? अभी तो कार ब्रांड की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। कार का जो ब्रांड है, मतलब BMW, ऑडी, ये सब का हेडिंग कौन सा है, कौन से कॉलम में लिखा है कार का ब्रांड नेम हमारे डेटा सेट में? आई थिंक मॉडल ब्रांड नंबर। मास्टर डाटा सर, ब्रांड हम्म, मास्टर डाटा। हाँ, ब्रांड मास्टर डेटा में कॉलम बताओ, कॉलम का नाम बताओ। आई एम कमिंग टू द ब्रांड मास्टर डेटा। अभी देख के बताओ क्या नाम है। मेक।
हाँ मेक है, मॉडल नहीं है। मॉडल में इस मेक के जितने मॉडल हैं वो आ रहे हैं, अभी हम मेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडल राइट नाउ। ओके, so what we'll do is we will select the make. अच्छा, why we are not selecting the model, that will also I'll tell you. अभी मैंने मेक सेलेक्ट करा तो ये क्या लिस्ट दिखाई दे रही है आपको? Audi, BMW, Ford. ब्रांड राइट, नेम। ब्रांड नेम्स दिखाई दे रहे हैं ना, वी कैन सी द ब्रांड नेम। अभी सम वाज कोई, ये नैन्सी बोल रही थी कि मॉडल रखते हैं हम लोग इधर। ठीक है, लेट मी गो विद व्हाट शी इज सेइंग। ठीक है, ये मैंने मेक रखा है। लेट अस क्रिएट वन मोर स्लाइसर, लेट अस इंसर्ट वन मोर स्लाइसर ओवर हियर, इसी के नीचे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इस बार मॉडल लेंगे हम। तो कितना बड़ा लिस्ट आया नैन्सी? यूज। Huge. So which one is the better option to select? Make or model? मेक। हाँ, ठीक है, तो वी विल रिमूव दिस। अच्छा चलो, इसको भी रखते हैं अभी। आई वांट टू शो इन यू। दिस ऑल्सो वी कैन यूज फिल्टर वन पार्ट। सॉरी। इन दिस वन ऑल्सो वी कैन यूज फिल्टर वन पार्ट। हाँ, वी विल यूज दैट। नाउ सपोज आई क्लिक ऑन ऑडी, आर द नंबर चेंजिंग? यस सर। इज द फिल्टर ऑल्सो चेंजिंग? मॉडल चेंज हो गया, मॉडल का जो लिस्ट था उसमें कुछ चेंज आया है, देखिए फ्रॉम मॉडल का। सीरीज इट केम टू A1 A2। हाँ करेक्ट, व्हेन आई सेलेक्ट BMW, BMW has 24 वेरिएंट्स। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स नाउ, अभी क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अब ये नंबर ऑफ यूनिट जो है वो मिलियन में पॉइंट्स आने लग गया है। तो क्योंकि कम होंगे व्हेन यू सिलेक्ट एनी ब्रांड, सो वी विल चेंज इट टू नन, और मे बी थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये ठीक दिखेगा, रेवेन्यू चलेगा, इसको थाउजेंड्स कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। सो व्हेन यू सेलेक्ट फॉर्ड, मॉडल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन यू वांट टू लुक एट अ बिगर कैटेगरी फर्स्ट, तो जब भी डेटा होता है तो सबसे पहले बड़ी कैटेगरी को देखेंगे, उसके बाद छोटी कैटेगरी, उसके सब पार्ट पे जाएंगे। तो मैं, कोई भी कार डीलर वो होगा, ऑटोमोबाइल ओनर होगा, ऑलवेज यू हैव टू थिंक ब्रॉडर। और आप ये सोचिए कि मैं मालिक हूँ, मेरा शोरूम है, तो मुझे अगर चेक करना है तो मैं मॉडल की सेल से पहले ब्रांड की सेल पे देखना चाहूंगा कि विच ब्रांड इज गिविंग मी मोर सेल्स। ठीक है, तो आप वैसे जाना चाहेंगे, ऑडी, BMW, फोर्ड, हुंडई, स्कॉडा, टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, कौन सा ब्रांड ज्यादा सेल दे रहा है। ठीक है, बट अभी ये दी स्लाइसर्स आर नॉट अपियरिंग लाइक दिस, लाइक दिस। जो लोगो था ना ब्रांड का, ये स्लाइसर में लोगो नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू हैव दैट लोगो, वॉट कैन आई डू? एंड लेट मी शिफ्ट दिस लिटिल डाउन, इन तीनों को थोड़ा नीचे ले आते हैं। नाउ हु विल आंसर दिस कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ इमेज? समीर, सिंस यू ऑलरेडी डन, आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस। Sir, अच्छा, we have to go to in table, left hand करेक्ट। side. वी हैव टू गो टू द टेबल So and we have to then, select the brand master data from the table. yes, sir. Then Click on logo. click on logo. Yes, sir. And go to the data category and convert to image URL. Correct. Now see people, when you have any URL, Power BI doesn't know that is a URL. It will consider this as a text only. देखो डेटा टाइप पे क्या लिखा रहा है, टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट के अंदर कुछ शक्तियां हैं कि वो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यूआरएल बन जाए, यूआरएल है वो टेक्स्ट, और वो आपको यूआरएल पे ले जाएगा। लेकिन ये शक्तियों का एहसास इसको नहीं है पावर बीआई का। हम उसको वो एहसास दिला रहे हैं, कैसे दिला रहे हैं? उसको बोल रहे हैं कि भैया ये डेटा जो है अनकैटेगराइज तुमने कर रखा है, इसको बना दो आप वेब यूआरएल, वेब यूआरएल नहीं, इमेज यूआरएल बना दो। और उस यूआरएल पे जो इमेज रखा हो ना, उसको लेके आना, ब्रिंग दैट इमेज। ठीक है, डोंट ब्रिंग दैट यूआरएल, ब्रिंग दैट इमेज। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट, अगेन आई विल रिपीट। ठीक है, कैसे करना है?
अभी पहले हम एक काम करते हैं, ये स्लाइसर तो हमारे पास था ही, है ना। ये हमने मेक को लेके बनाया था, ब्रांड नेम को लेके। एक और स्लाइसर बना रहा हूँ, एंड दिस टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू द डेटा टैब, ब्रांड मास्टर डेटा पे जाएंगे। ब्रांड मास्टर डेटा पे जाने के बाद मैं यहाँ से अगर मेक सेलेक्ट करूंगा तो लिस्ट आ जाएगा। हम इमेज पे क्लिक करते हैं, तो व्हाट डू यू सी नाउ, व्हाट डू यू सी नाउ, टेल मी व्हाट डू यू सी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? URL links. URL Links. links. We see the text. We see the text. Whatever the link is there, we are seeing that text. When I click on logo PNG, what do you see? लोगो। We see the logo. But behind the logo, there is a URL only. ठीक है ना? ये और भी लोगो हैं हमारे, क्योंकि वो वर्टिकल, इसको मैं अगर वो नीचे करूँगा सारे लोगो दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे लोगो आ रहा है, लेकिन उसमें लोगो नहीं आ रहा था, उसमें टेक्स्ट आ रहा था, लेकिन वो भी तो यूआरएल ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एज we had changed this image logo to image URL, it bought that image from the URL। इसको हमने अभी भी, इसकी शक्तियों का उजागर नहीं हुआ है। इसकी शक्तियां कैसे होंगी? अनकैटेगराइज में जाके क्या करना है? इमेज यूआरएल करना। फॉर्मेट में जाके। फॉर्मेट में नहीं जाके, टेबल व्यू में जाना है आपको। टेबल में you have to go to table view and then select the brand master data वाला टेबल, and in the brand master data in the table you have, Correct. Then we go to image. हाँ, then you click on this image column and then you go to data category and then you select that image URL। Okay. Then summarization and data category uncategorized. We have to कुछ connect नहीं, it. nothing you have to change, don't touch anything else। come to the report view and where is that list gone? वो स्लाइसर कहाँ चला गया हमारा? let us bring it back। कहाँ तुम चले गए? चिट्ठी ना कोई संदेश। देख रहा है वो। अभी देखा हम्म। है ना? नाउ वी हैव ऑल दिस ऑप्शंस, इमेजेस भी है, लोगो भी है, बट दे आर अपीयरिंग वर्टिकली। दे आर अपीयरिंग वर्टिकली। आई वांट टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लिस्ट। मुझे ऐसे देखना है, एक के बाजू में एक, एक के नीचे एक नहीं चाहिए, वन बिसाइड्स द अदर चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे? यस मिस्टर समीर। कैसे बनाएं इसको? हॉरिजॉन्टल लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ द वर्टिकल लिस्ट? सर ये मुझसे भी नहीं हुआ सर। अच्छा, जितना आपने किया, आपने कैसे किया वो? हाँ, मैंने देखा था आपने हॉरिजॉन्ट, आपने हॉरिजॉन्ट वो वर्टिकल लिस्ट ही डाली थी। आई हैड नोटिस दैट। फिर मैंने ये सोचा भी था कि तुम आओगे क्लास में तो तुमसे पूछूंगा। चलो, लेट अस लर्न दिस। आपने वो उतना जितना बनाया वो कैसे बनाया? आपने किसी वीडियो को देख के बनाया, अपने आप से बनाया, कैसे बनाया? और आपने पावर बीआई कहाँ से सीखा है? खुद से सीखा है? सर कुछ कुछ यूडीमी से सीखा है सर, अभी उसमें कोर्स चल रहा है कुछ अच्छा, कोर्स। यूडेमी से सीखा है। नहीं सर। तो यूडेमी वालों ने ये नहीं बताया क्या कि कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट? उस सर वाले उसमें फॉरेन तरीके लैंग्वेज से बोलता है ना सर, उसमें तो अच्छे से नहीं समझ में आता है, फिर हाँ हाँ, ट्रांसलेट करना पड़ता है मेरे को। सही बात है। फॉरेनर्स की लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए। आई डील विद लॉट ऑफ फॉरेनर्स नाउ, तो वो है। खैर कोई बात नहीं, देसी भाषा में ही समझा देता हूँ तुम्हारे को। तो ये जो देखिए, हमारा बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ आपको अगर पावर बीआई में करनी है तो सेटिंग करनी होगी, है ना। सेटिंग्स में जाना होगा उसकी। तो हम लोग लाइफ में तो खूब सारी सेटिंग्स करते हैं कॉलेज टाइम में।
सबकी एक दो तीन चार पता नहीं कितनी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन पावर बीआई में खूब सारी सेटिंग्स हैं। तो यू हैव टू एक्सप्लोर दो सेटिंग्स, ठीक है। तो क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। यू विल यूज दिस मैक्सिमम टाइम्स इन पावर बीआई, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, कस्टमाइजेशन, लुकिंग एट दिस थिंग्स ब्यूटीफुली, ऐसा। तो वो फॉर्मेट बार बार जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। देन व्हेन यू गो टू फॉर्मेट देयर इज अ स्लाइसर सेटिंग्स। एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। स्लाइसर सेटिंग्स, अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? आई जस्ट टेक योर अटेंशन ओवर हियर। आई वाज अटेंडिंग अ सेशन यस्टरडे, किसी से बात चल रहा था, और वो हुआ था कि अटेंशन स्पेन जो है वो कम हो रहा है लोगों का। बिल्कुल अटेंशन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और इन सब में क्या हो रहा है कि शॉर्ट्स आ गए हैं। तो एवरी वन वॉन्ट्स टू डू। मेरे को भी लोग लिखते हैं, आप इतने लंबे लंबे वीडियो बनाते हो, शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते हैं? हम ये बनाएंगे, शॉर्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये वाला सेक्शन स्लाइसर सेटिंग्स वाला, उसमें आपको दिखाई देगा ये वर्टिकल लिस्ट। कैन यू सी दैट वर्टिकल लिस्ट? वर्टिकल लिस्ट, यस सर। when you click on this vertical list you get different option, tile और drop down। तो हम टाइल पे क्लिक कर देंगे इसको, वर्टिकल लिस्ट से यू क्रिएट टाइल। और जैसे ही आप टाइल क्लिक करोगे यू विल सी ऑल दिस लोगो। बस इतना सा करना था समीर, जो कि उस अंग्रेज ने नहीं बताया होगा। स्लाइसर सेटिंग्स नहीं आ रहा है। आपको स्लाइसर पे क्लिक करना है पहले। यू हैव नॉट क्लिक्ड ऑन स्लाइसर आई गेस। स्लाइसर मींस जो इमेज के अंदर है वही स्लाइसर ना? जो जिसमें इमेज है वो वाला स्लाइसर, मतलब आपने स्लाइसर इंसर्ट करा, फिर उसके अंदर लोगो, इमेज लोगो, पीएनजी वाला। उसमें लोगो दिख रहे हैं। हाँ, जिसमें लोगो दिख रहे हैं उसी को क्लिक करिए, फिर क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन, फिर यू विल सी द स्लाइसर सेटिंग्स। दिख रहा है आपको? When we go click that, yeah. Everyone, are you able to do this? Those who are done, write down done in the chat box. Shiva, if you are done, Sameer, Yes, yes, Nancy, yes, done. हाँ done, done. I need a confirmation कि हाँ you are understanding. That is why I am asking. For ठीक है, example, I have sent it the screenshot also. So means I once am we, checking. You have sent it in the Zoom chat, the screenshot. yeah, Share Power it BI here. 0 to 0. अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके। For example, when we select it, हम्म, हाँ, तो when you selecting, come to the right hand side. See, in your there is a difference in your Power BI as compared to mine. So where you see visualization, hmm, वहां पर देखिए सेकेंड बटन इज द फॉर्मेट बटन। क्लिक ऑन दैट। in the visual, okay, second button, correct. हाँ, है ना। और वहां पर यू विल Format सी your दिस। visual slicer settings हाँ, गो in टू द vertical स्लाइसर list सेटिंग्स। हाँ, tile. मिल गया वहां पर आपको? Yeah, yeah. Yeah, and see what you have to do. See, you will not see the यहाँ आप देखेंगे, I am not seeing that visualization over here. मेरे फिल्टर और फॉर्मेट है, विजुअलाइजेशन यहाँ नहीं आ रहा है, एंड आई हैव दीज बटन्स ओवर हियर। Yeah, these तो buttons क्या, are there. हाँ, so why your buttons are not coming? Because the thing is that let me show you and everyone see that you have to go to the file menu. Just check everyone, Okay. सब लोग जाना file menu में and Hmm. go to options and settings. Go to file menu, go to options and settings, and in the options and settings again you have to go to options. Okay. ठीक है, file menu, options and settings, again you have to go to options. And once you do that, you will see a window coming up. You will see a window Correct. coming up. The current file and global. हाँ, करंट फ्लाइट ग्लोबल, सो ग्लोबल पे करेंगे हम लोग, है ना। वी विल स्टिक टू ग्लोबल। दीज Hmm. आर द सेटिंग्स ऑफ पावर बीआई, ओके। Hmm. ये यूडेमी वालों ने बताया नहीं बताया? ये लोग यूडेमी के बहुत दीवाने हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। नो समीर, सर। नो, चलिए कोई बात सर नहीं। हमने अभी पहले क्लास में किया था बट आई ट्राइड टू डू इट उसमें प्रीव्यू फीचर्स वगैरह में बट वो हुआ नहीं। हाँ कोई बात, अभी एक बार वापस से ट्राई कीजिए आप।
ठीक है, कम टू द प्रीव्यू फीचर। समीर प्रीव्यू फीचर पे आइए और क्लिक ऑन दिस ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, ओके। हाँ, आपके उधर अनचेक होगा ये, है ना? हाँ, करेक्ट। आप पुट अ टिक ओवर देयर You और have ये, enabled one or more pre that require restarting Microsoft Power BI. हाँ, Okay. सो यू हैव टू रीस्टार्ट इट नाउ। ओके, देयर आर मेनी अदर न्यू फीचर्स दे कीप ऑन एडिंग, तो ये कर दो आप। इट विल आस्क यू टू रीस्टार्ट, सो बिफोर रीस्टार्टिंग सेव वॉट एवर यू हैव डन। इसको सेव कर देंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन, इट विल सेव द फाइल, क्लोज द फाइल, your Power BI window, and again open it. ठीक है, again you have to open that Power BI. See, everyone is there in the coaching business or training business or education business to earn money, because there is a lot of money in this. Okay, and Udemy and all these websites, they sell courses at 500, 1000, 2000. आपने कितने में खरीदा समीर ये Udemy वाला सिक्स पावर? हंड्रेड है सर। हाँ, 600। हाँ, 600। तो 600 में क्यों देते हैं? देर इज अ रीजन। रीजन इज देर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, और वो कंपनी जो है वो फंडेड कंपनी है, उसके पास पैसा कहीं से आया, उसने वो बिल्डअप करे। देर आर गुड ट्रेनर्स, इंटरनेशनल ट्रेनर्स होते हैं, बट वो क्या होता है, देर इज अ लिमिटेड कंटेंट दे डू, और वो रिकॉर्ड हो जाता है, एक बार उनको पैसा दे दिया जाता है। आई हैव बीन ऑफर्ड द सिमिलर, आई गॉट सिमिलर ऑफर फ्रॉम यूडेमी एंड अदर दिस थिंग, कि आप आइए रिकॉर्ड करिए, फिर हम उससे पैसा छापेंगे, आपको थोड़ा सा उसका प्रसाद दे देंगे। आई डोंट वांटेड टू डू इट बिकॉज देयर वाज अ वेरी लिमिटेड अप्रोच इन दैट। बट होता यह है कि आपको दिखाएंगे 40 का कोर्स, 40 घंटे का कोर्स है, रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम एक्सेस है, ये सब है, और पीपल इन्वेस्ट, क्योंकि 500 600 रुपए हैं, क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं। वंस यू इन्वेस्ट एंड देन यू लॉग इन, आपको एक तो जैसे लैंग्वेज इशू है, तो लैंग्वेज अगर फॉरेन वाले का ले लिया है तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, इंडियन का भी लोगे क्योंकि वो इतना इंटरनेशनल लेवल होता है, तो उसकी भी इंग्लिश इंटरनेशनल वाली होती है, तो वो भी समझ में नहीं आता है, तो वो 600 रुपये भी एक तरीके का वेस्ट है। फिर भी आप कोशिश करते हैं, चलो टूटी फूटी जैसे समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत जितना करा रहे हैं कर लेते हैं, बट यू डोंट गेट टू लर्न। आई एम नॉट सेइंग दैट मेरे से करोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, या बहुत कुछ एक्स्ट्रा यू विल गेट, बट वट एवर आई डू, देर आर सो मेनी थिंग्स इन पावर BI। पूरा साल भी अगर पढ़ेंगे ना, एवरी डे, इफ यू टेक 1 hour to do, to learn whatever features are there, you'll not be able to complete in 365 days। 365 घंटे में भी नहीं होगा, तो 40 घंटे में तो आई कैन राइट ऑन द स्टैम्प पेपर, नो वन कैन टीच यू पावर BI in 40 hours। I can also not teach, but what I ensure that if you give 40 hours, you will be able to use all those features which are required to build a report। अटकोगे नहीं। और ये जो रिपोर्ट बनाना होता है ना, वी आर लर्निंग इट स्टेप बाय स्टेप। व्हेन यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे विल जस्ट गिव यू अ पिक्चर, ये फोटो निकाल के दे देंगे, बोला ऐसा बना के ले आओ, 2 घंटे बाद मीटिंग है। 2 घंटे में अगर आपने बना दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मीटिंग में आपको नहीं बुलाया जाएगा, और अगली बार से ऑफिस में भी नहीं दिखोगे फिर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर जॉब्स बिकॉज दे डोंट नो। और अभी पहले ऐसा होता था कि नहीं निकालते थे, अभी निकालते तुरंत, क्योंकि दे वांट पीपल हु नो थिंग्स। अभी बहुत क्रंच चल रहा है जॉब का वैसे भी, तो अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू at least like invest money at the right place first। And how do you, कल मैंने एक चीज पढ़ी थी, आई कीप ऑन रीडिंग थिंग्स एंड आई वाज टॉकिंग, तो एक चीज पढ़ा था कि सक्सेस कम्स बाय टेकिंग राइट डिसीजंस। हाउ यू आर सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल कब बनते हैं, जब आप सही डिसीजन लें। एंड हाउ डू यू टेक राइट डिसीजंस, राइट डिसीजन कम्स फ्रॉम experience। And how does experience comes? Experience comes by taking bad decisions। Okay, so there is a cycle। पहले आप एक गलत डिसीजन लेते हो,
उस गलत डिसीजन से आपको लगता है ये डिसीजन सही था, लेकिन आप ले लेते हैं उसको, उस समय की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से वो बहुत सही डिसीजन होता है, हम ले लेते हैं। लेने के बाद जब हम उस डिसीजन को फॉल मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, ये डिसीजन सही नहीं था। बट देर नाउ यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट गो बैक, वो डिसीजन आपने ले लिया है। ठीक है, उस समय किसी ने समझाया भी होगा, लेकिन हमारी समझ, हमें लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। तो वो डिसीजन लेने के बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये डिसीजन तो सही नहीं था, ले लिया है, अब क्या करें। अब जब दूसरा डिसीजन आपको सिमिलर लेना होता है, देन यू आर वेरी कॉशियस। आप बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाते हो, यार पहले मेरे 600 रुपये डूब गए हैं, अब ये वाला कोर्स तो 4,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है, क्या ये भी तो नहीं डूब जाएगा? मतलब यू आर डाउटिंग द अदर कोर्स, द अदर पर्सन, द अदर थिंग, बिकॉज ऑफ योर बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, सो यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद समवन, और वहां पे तो स्टिक कम था। फिर आप जब एक दूसरा डिसीजन ले रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद पीपल। People want to learn, people want to grow, people want to make money, but before you make money you have to invest yourself in learning। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी जस्ट बाय एनरोलिंग इनटू कोर्स, जस्ट बाय मेकिंग श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग 600 रुपीज, यू विल नॉट गेट 600 का ज्ञान। वो तभी आएगा व्हेन यू प्रैक्टिस। आप खुद से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मेरा भी कोर्स बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। If you subscribe to any course, if you subscribe to any channel, and you don't watch a video, will all the videos come into your memory directly? है ना? तो आई वेंट टू, हम लोग जैन हैं तो हमारे यहाँ पे प्रवचन होते हैं, साधु मुनि आते हैं, वी हैव दिस सत्संग काइंड ऑफ अ थिंग इन द मॉर्निंग। सो ऑन अ संडे आई वाज फ्री, तो मैं गया 1 घंटे। उन्होंने ये कहा कि प्रवचन में आने से, व्हेन यू अटेंड अ सत्संग, व्हेन यू अटेंड एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल दिस थिंग लर्निंग्स, उसमें आ जाने से आपके अंदर वो सारी चीजें नहीं आ जाएंगी जो भी वो ज्ञान मिल रहा है वहां पर, या गुरु जो भी बोल रहा है। इट विल कम ओनली व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग बाय इट। तो इट वाज महावीर जन्मोत्सव, उस दिन मैं गया था, तो बोले कि महावीर भगवान हमारे सबसे बड़े भगवान है, और हम उनके जियो और जीने दो और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और हम जैन कहलाते हैं। लेकिन उनका नाम लेने से, उनकी जय बोलने से, या उनके बारे में बोलने से आप जैन नहीं बन जाएंगे। यू विल बिकम जैन व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट ही हैज प्रीच्ड। अगर वो बोलते हैं कि अहिंसा करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, और आप रोज झूठ बोल रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, violence is not by just pushing someone, or fighting with someone, or killing someone, or slapping someone. If you say something wrong to someone, it is also a violence. If you hurt someone, it is also violent. If you demean someone, it is also violence. So you have to improve your quality of life by improving the quality of your thoughts, your words, your actions, your intentions. तो ये सब इट इट ऑल इज अटैच्ड टू लर्निंग्स ऑल्सो, ये सब चीजें सीखने से भी हैं। आप जब तक अपना होल एंड सोल नहीं डालेंगे सीखने में, जब तक आपको नहीं आएगा। आई पुट इन माई होल एंड सोल इन इन टीचिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट आई चूज टू डू। तो जब अगर मैंने कोई चीज मेरी इच्छा से मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको पूरा दूंगा, लेकिन अगर मजबूरी होती, मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस पैसे पे होगा, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। पैसा नहीं आएगा तो मैं फिर वो काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। पैसा आ भी जाएगा तो भी मैं उतना अच्छे से नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा कमाना था, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इफ समवन जॉइन्स माय कोर्स एंड डजंट कम टू द क्लास, because I don't have to put any efforts. I'm earning without that. So Udemy, all these edtech platforms, they are so happy that so many millions of people are giving them money and not even coming to the class, not even watching the recording। अगर आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी एडटेक, मेरा भी एडटेक है एट दिस एक्सेल वाइज, व्हेन आई सी द रिपोर्ट्स आई एम वेरी सैड कि यार लोगों ने 3-3 हजार। देर इज वन गर्ल, yesterday she had attended my class, excel class, for the first time. She enrolled my course to my course 2 times। 2013 में मैंने एक्सेल का एक बैच स्टार्ट किया था, उसने 2,500 रुपए का फीस था, 2,500 रुपए दिया, उसने एनरोल किया। शी कुड नॉट अटेंड अ सिंगल लाइव क्लास, उसने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा, वो बैच खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल है। 2024 आई स्टार्टेड अ न्यू बैच, शी थॉट
मेरा बिना टॉकिंग टू मी शी एनरोल्ड इन दैट ऑल्सो कि मैं आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो उसमें मैंने एआई वगैरह लिखा, तो उसने वापस 3,000 रुपए दे के उस बैच में भी एनरोल कर लिया। शी वॉज देयर इन माई 2 बैचेस। आई वॉज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स, मैंने कहा यार ये लड़की 2 बार रजिस्टर कर ली है, मेरे पास 2 बार फीस आ गई, बट उसने कभी भी कोई लेक्चर देखा ही नहीं है मेरा। She had watched my videos on YouTube or some of the lectures. She had enrolled without asking to me anything, without talking to me, without even telling me कि मैंने 2 बार enroll कर लिया है. I reached out to her कि what are you doing? Why you invested money twice and you're not watching? She like कि हाँ sir time नहीं मिल रहा है man. I motivated. I talked to her. I asked कि you come to the class once. Yesterday night I did a session. She attended that session and then she got convinced कि हाँ सिर्फ पैसा दे देने से नहीं सीखना होता है। यू हैव टू टेक आउट टाइम। टाइम इज, एवरी वन विल नॉट हैव टाइम, किसी के पास टाइम नहीं होगा। लेकिन हम लोग आ रहे हैं ना, सब लोग, देर ऑल प्रोफेशनल्स। देर इज अ सीएफओ इन दिस कॉल, अभिनंदन इज अ कंपनी सीएफओ। उनसे ज्यादा बिजी इंसान कौन होगा? वो पूरा फाइनेंस संभालता है। स्टिल ही इज कमिंग टू द, स्टिल इज लर्निंग। देर इज वन पर्सन, ही इज फ्रॉम पीडब्ल्यूसी in this batch. He is working in a big four. Still, he is learning. So, as a student, if you say I don't have time, I don't believe you. You're not PM Mr. Modi कि आपके पास टाइम ही नहीं है. You're not putting your time in the right direction. Yesterday, I had a session at 3:30 a.m. in the morning. It was an international session. 8 घंटे का मेरा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चला, सुबह 3:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। After 11:30, I had one more session of 8 hours from 1:30 to 9:30. That was again international VAT training session, back to back. उससे पहले रात को 9 to 11 आई एम हैविंग एक्सेल एडवांस सेशंस। तो मैं रात को 9 से 11 बजे सेशन करके, उससे पहले पूरे दिन का सेशन था, ट्रैवल करके आया मैं। 9 से 11 मैंने सेशन लिया। आई रेस्टेड फॉर सम टाइम। आई वोक अप एट 2:30, 3 बजे, 3:30 के सेशन के लिए मैं 2:30 3 बजे मेरा नींद खुल गया। आई वोक अप, आई गेट रेडी। 3:30 I started the session. 11:30 I closed that. उसके बाद I had some calls. वो किया। I could hardly rest in between 15-20 minutes, आधा घंटा बस खाना खाया। Again I started the next session. It went over till 8:30. 9:30 बजे तक था, लेकिन 8:30 बजे खत्म हो गया था। Then again I had planned one more session. Excel का मेरा क्लास नहीं हो रहा था, मैंने बोला चलो we will do one session. Then I did one session of 9:30 to 10:30. And again today morning I'm doing this because this is something which I enjoy doing, which I like. So I don't look at the other aspect of it. But the thing is that कि जितना efforts मैं लगाता हूँ, उतना अगर आप भी लगाएंगे तो we will work in a synchronization manner. If there is only pressure from one side and not from the other side, things will not go in that direction. This is what I want to convey. और मैंने काफी सारा टाइम इस चीज पे ले लिया होगा, but this is one thing that I want to have. Yesterday I made some report and there are some challenges, so I will connect you separately. हाँ, you can do On that. one of our live data, I have worked something. Sure. See, I'm open to all these kind of things which you want to do outside this also. Just give me a message, drop me a message. And what I will recommend everyone is that whenever you're practicing, you're facing an issue, just first share a screenshot because it becomes easy to understand what the problem is. स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दो इन व्हाट्सएप। whenever I have time, I'll see that I'll give you a solution there itself. समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप we can connect on a Zoom call or a Google Meet whenever I have time. ठीक है, बट यू हैव टू इनिशिएट थिंग्स। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे इशू आ रहा है। आप अपने तक ये रखेंगे तो आई डोंट हैव दैट पावर्स कि मैं सोच सकूं कि हाँ क्या इशू आएगा, ये सब। ठीक है, सो विद दिस विल कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। what you have to do is because I will give the assignments and I want everyone to practice it. I cannot force anything. See, I can only just guide you. ठीक है, I cannot force anyone to do anything. I never do that. But as a human being, I believe that हाँ, as a mentor, it is my responsibility to imbibe that thing in you. ठीक है, तो what you need to do is आपको Sir, इस तरीके से, one doubt, या sir. In या Slicer, we can type manually to filter it out. In Slicer, that option is there. yeah, yes, let me see that. I think that option is there. You can type on manually, ये वो drop down में आता है। So you go to the slicer settings and you have a drop down. Okay,
So you can select anything, but you cannot type manually. ये वाला ऑप्शन शायद नहीं है इसमें, मैनुअली वाला। ठीक है, वो उसमें आता है, टैब्लू में आता है, पावर बीआई में आई हैव नॉट सीन दैट। It's not there to type manually as you are asking. Click on the logo to select select a brand to view the report. Okay, we will do that. इसका थोड़ा सा change कर देंगे. Now what is the assignment you have to do? Because tomorrow is a Sunday and then we'll meet on Monday then. Okay. What you have to do is you have to create a slicer with the images. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी स्लाइसर है, इट इज अ टाइल, तो वो एक ही दिखा रहा है। वी हैव टू क्रिएट अ स्लाइसर लाइक दिस एंड यू हैव टू क्रिएट these कार्ड्स वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। यू हैव टू क्रिएट दिस बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, ये दो बनाना है आपको, पाई चार्ट, these three and this four also. So these four visuals you have to create, and there is nothing big, there is nothing rocket science in it. You have to just select one visual card from here. Okay, for example, I'm giving the demo for one of this because the time is already over. So you click on the outside area of the canvas and you select any visual. You will see an empty container. Okay, and you put the values. मान लो मुझे, I want to see the count by the brand model. So I will select the make. I will select the make and I'll select the price. Okay, it will auto populate the visual. So this is what you are supposed to do. इस तरीके से आपको सारे चार्ट्स बनाने हैं. Keep it ready. The next session we will do that. Okay. Any other question, anyone? Thank you. Okay.